Hello friends, today we are taking the new method to solve the quadratic equation. In last 2 to 3 lectures we discussed about the factorization method. Now today we are taking the formula method. Actually this is called as the Sridharacharyya's formula. But हम इसको as a formula method study करेंगे. It's very simple and very interesting also. We can enjoy. I hope we can enjoy it. Okay. Let us start the formula method for the quadratic equation. Right. To solve the quadratic equation by formula method, we know very well what is the general form of quadratic equation. It is the ax square plus bx plus c is equals to 0. We know very well a, b, c are the real number, but a is rather than 0 real number. Okay, this is the general form of the quadratic equation. By using that formula method, what is the formula to find the x is equals to, हमें फाइनली सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये हमारा फार्मूला है. लिसन केयरफुली, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. Here a, b, c are the, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. So what is x? Minus b plus or minus अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब इसमें जो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है ना, इट हैज द पर्टिकुलर नेम. इट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनेंट. इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? Discriminant is the b square minus 4ac. Discriminant किसको बोलते हैं? b square minus 4ac and it is denoted by d. So d is equals to b square minus 4ac. What is the d? It is the b square minus 4ac. और इसके वैल्यू पे बहुत डिपेंड है. हम इसको डिस्कस करने वाले. ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम डिसाइड करने वाले नेचर ऑफ रूट्स. अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, फॉर एग्जांपल अगर 0 आती है तो अंडर रूट 0 मतलब 0. ओके, तो रूट क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a, एक ही रूट मिलेगा. इफ इट इज ग्रेटर देन 0 आएंगी तो हमको दो अलग से रूट मिलेंगे. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आती है, हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब अंडर रूट नंबर क्या आता है? नेगेटिव. कैन यू फाइंड द रूट ऑफ नेगेटिव? नो, यू कांट फाइंड आउट द रूट ऑफ नेगेटिव. इट इज नॉट अ रियल नंबर. तो रूट रियल मिलती ही नहीं है. तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, एट दिस मोमेंट वी हैव टू कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द फार्मूला मेथड. Okay, so which is called as the discriminant? b square minus 4ac is called as the discriminant. For example, we are taking the one example. Okay, for example, if I am taking x square minus 5x plus 6 is equals to 0, a quadratic equation. What is the coefficient of x square? It is not given. It is not given मतलब क्या है? क्या है? 1. So a is equals to 1. b is equals to minus 5 and c is equals to 6. इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करना है. So how can find out the value of discriminant? b square minus 4ac. b square minus 4ac. ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट इसका. ओके, सो b स्क्वायर मतलब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब क्या है? 1 इंटू b 6. सो माइनस 5 स्क्वायर इज 25. Okay, minus 4 into 1 minus 4 into 6 minus 24. 25 minus 24 is 1. तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 1. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d is equals to 1. d is equals to 1. अब हम वैल्यूज लेंगे. We know the formula, therefore x is equals to minus b plus or minus under root d
upon 2a. D for discriminant. D for discriminant. So we taken the minus b. What is the value of b? Minus 5. Minus b is minus 5 plus discriminant का वैल्यू है 1 अपॉन 2a प्लस और माइनस अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस ओके प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का रूट क्या है वी नो इट इट इज 1 अपॉन 2 तो x के दो वैल्यूज आ गए x के क्या आ गए दो वैल्यूज आ गए सो x इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट टाइम वी टेक इन द 1 plus 1 upon 2 or x is equals to 5 it is plus or minus 1 हमने क्या लिया प्लस अब बचा कौन है माइनस minus 1 upon 2 so you get that x is equals to 5 plus 1 6 upon 2 or x is equals to 5 minus 1 4 upon 2 so x का वैल्यू है 3 और x का वैल्यू है 1 this is the it is 2 4 by 2 it is 2 this is the solution of the given equation so to finding the solution of given equation हमें फार्मूला क्या यूज करना है what is our formula under root b square minus b x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a this is our formula to finding the quadratic equation means roots of the quadratic equation by formula method क्या फार्मूला हमारा minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a so इसमें under root b square minus 4ac जो है तो टर्म क्या है b square minus 4ac तो उसको क्या बोलते हैं हम discriminant हम मींस पूरी दुनिया ही बोलती है okay so it is called the discriminant so denoted by d is equals to क्या मिलता है हमको b square minus 4ac अब इससे हमने एक इक्वेशन भी ले लिया तो हम इस पे थोड़ा अलग से स्टडी करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या मिला हमको x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फार्मूला बना इसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अब इसमें प्लस और माइनस है तो एक टाइम प्लस रूट आएंगी और सेकंड टाइम माइनस इसका मतलब फर्स्ट रूट पॉजिटिव और सेकंड रूट नेगेटिव होती है ऐसा नहीं है दिस वन इस प्लस और माइनस में से वी टेक इट फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव इट नॉट मींस दैट फर्स्ट रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सेकंड रूट इज नेगेटिव बोथ रूट्स मे बी पॉजिटिव दे मे बी बोथ नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव और फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव हो सकता है ऐसा बट वी टेकिंग the here first time positive and second time negative so first roots of the equation are called as the alpha and beta are the roots of given equation so generally मतलब वही लेते हैं alpha is taken as a minus b plus under root d upon 2a what is alpha minus b plus दिस प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे ओके सो प्लस को जो है वो अल्फा देते हैं माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनेंट एंड डिनोटेड बाय d so I am taking the plus under root discriminant upon 2a and what is the beta is equals to minus b minus under root discriminant upon 2a these are the roots of the given equation have you got it what is the formula x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac under b square minus 4ac को क्या बोलते हैं discriminant upon 2a so it is plus or minus alpha and beta are the roots of equation alpha we taking as a plus minus b plus root d upon 2a beta we taking as a minus b minus root d upon 2a okay are you got it today we finding the first of all discriminant value of discriminant कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दूंगा कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे एंजॉय करना है आपको पता है जो मैंने स्किप किए उसको एंजॉय करना है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते तो मैं अभी मुझे कल ही पूजा ने पूछा था
sir, don't understood these questions. Okay, I am not understanding this. I am not able to solve the answers. मैंने उसको आंसर्स फाइंड कर दिए. So like that, फाइंड करके दे दिए, सेंड कर दिए. तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स. ओके, बट आपको एंजॉय करना ही करना है, कंपल्सरी करना है. ओके, आर यू कॉपी इट फर्स्ट ऑफ ऑल. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, एंड देन वी आर गोइंग, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 और ग्रेटर देन 0, हम रूट फाइंड कर सकते हैं. So then we going toward the finding the roots of the given equation by formula method. Okay, so let us start. So write the discriminant of the following equations. इसमें 6 equations है. Among them I taking the only 3. We have to solve the rest 3 at home. Okay, we have to enjoy the rest. So I am taking the odd numbers. उसमें root है एक जगह पे. That's why I am taking the odd number. So first one is first make a first sub question. Okay, equation is 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0. उनको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. You have to find the value of discriminant. Okay. So by comparing with ax square plus bx plus c, we get the a is equals to 2, b is equals to minus 5 and c is equals to 3. a की वैल्यू हमको मिली है 2, b की वैल्यू मिली है -5 और c की वैल्यू 3. We know the discriminant b is equals to b square minus 4ac. b का स्क्वायर है मतलब किसका स्क्वायर है? -5 स्क्वायर minus 4 into a is 2 into b c is 3. Okay, -5 square is 25 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. So value, what is the value of discriminant? 1. Discriminant is equals to 1. Are you got it? Then you take in the third question. Third, both easy questions here. X minus 1 into 2x minus 1 is equals to 0. Listen carefully. Is it a quadratic equation? No. At this moment, it is not a quadratic equation. We have to first of all convert it into quadratic equation as a ax square plus bx plus c. Then take the coefficient of x square as a, coefficient of x as a b, and constant term as a c. So converting it in the form of ax square plus bx plus c, and then you take in the values of a, b, c to finding the value of discriminant. That is b square minus 4ac. So doing x into 2x, 2x square, x into minus 1, minus x. Minus 1 into 2x is minus 2x. Minus 1 into minus 1 is plus 1 is equals to 0. So you get the 2x square minus 3x, minus x minus 2x minus 3x plus 1 is equals to 0. What is the coefficient of x square? 2. So it is the a. Because you comparing with ax square plus bx plus c, x square का coefficient a, x का coefficient as a b is equals to minus 3 and constant term as a 1. Then you finding the value of discriminant b square minus 4ac is equals to minus 3 square minus 4 into 1 into 1. So discriminant, coefficient of x square is 2. Okay, so you get the minus 3 square is 9, 4 2s are 8. Value of discriminant is equals to 1. Discriminant is equals to 1. And then we take in the fifth question. We are going toward the fifth question. Fifth question is root 3x square
What is the coefficient of x square? Root 3 plus 2 root 2x. Coefficient of x is 2 root 2 minus constant term is 2 root 3 is equals to 0. If you compare it with ax square plus bx plus c, we get the a as a root 3, b as a 2 root 2 and c as a minus 2 root 3. Okay, and we know our target is to find the value of discriminant. The value of discriminant is b square minus 4ac. It is 2 root 2 whole square minus 4 into a is root 3 and c is minus 2 root 3. Then the b square minus 4 into a into c. Have you got it? What is the square of 2? 4. And square of root 2 is 2. So 4 2s are 8. Minus into minus plus. Okay. 4 2s are 8. Root 3 into root 3 is 3. 8 3s are 24. Are you got it? So therefore, the value of discriminant is equals to 24 plus 8 is 32. These are the values of discriminant. Here we are taking the odd number questions. We have to enjoy at home even number questions. Okay, please copy it. Then we are going to solve the quadratic equation by formula method. Okay. If the value of discriminant is less than 0, then you can't able to solve the equation because roots are not real. Okay. So second instruction is that in the following, determine whether the given quadratic equations are the roots. Find the roots. Okay. इसमें 12 questions हैं. Among them, I am taking the just 4 questions. 8 आप घर पे solve करेंगे. Okay. And from third, we will discuss in next lecture. So here we taking the 5 questions लेता हूँ मैं. 7 आप घर पे solve करेंगे. So I am taking the third. Third question क्या है? Root 3x square. Root 3x square plus 10x minus 8 root 3 is equals to 0. क्या क्वेश्चन है? Root 3x square plus 10x minus 8 root 3. अब इसको सॉल्व करेंगे. It is in the form of ax square plus bx plus c already. Okay. It is root 3x square plus 10x minus 8 root 3 is equals to 0. If you comparing with ax square plus bx with plus c is equals to 0, then you may write here compare with ax square plus bx plus c is equals to 0. What is the coefficient of x square? A. So what is the value of a here? A is equals to root 3. Coefficient of x as a b, that is the b is equals to 10. And constant term is minus 8 root 3. Got it? Then find first of all the value of discriminant. Okay? B square minus 4ac is equals to. Okay? You may write first of all formula, then find the value of discriminant and put it. Okay? आप ऐसा भी कर सकते हैं. हमको सॉल्व करना है इक्वेशन. So x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. You may take the, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, is equals to minus b plus or minus under root d upon 2a. We know d as a discriminant and value of discriminant as a b square minus 4ac. अब ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. So we taking the first of all value of discriminant, that is b square minus 4ac.
b यानी कि 10, 10 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है √3 इंटू b एज अ माइनस c एज अ माइनस 8 √3, b square minus 4 into a into c. Okay, so we get the 10 square as a 100 minus into minus plus 8 4s are 32. Okay, √3 into √3 is ऐसा कर सकते हैं ना √3 into √3 3, 8 3s are 24, 24 4s are 96. So we get the b square minus 4ac as a 196. Got it? Put that value. Therefore, x is equals to minus b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या है? 10 प्लस और माइनस अंडर रूट 196 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है √3, 2 into √3. So we get the x is equals to, I'm taking here, x is equals to 10 plus or minus root of 196 is 40 upon 2 √3. So take first time positive, x is equals to 10 plus 14 upon 2 √3, or x is equals to 10, we taking first positive and then negative, 10 minus 14 upon 2 √3. समझ रहे आपको? So we taking the x is equals to 28 upon 2 √3, that is the x is equals to 14 upon √3, or x is equals to minus 4 upon 2 √3. So you get the x is equals to minus 2 upon √3. This is the solution of the given equation by formula method. Are you got it? Edit please. Then we take in the next question. मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. So I am taking the less questions. कोई काम कर लूँगा मैं questions, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको करना है. Quadratic equation needs a more and more practice. इस चैप्टर के लिए आपको मैक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमेशा. ओके, बस फार्मूला वैल्यू पुट अप करते रहेंगे. देन थर्ड के बाद हम लेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, 6 लेंगे और 10 लेंगे. देन रेस्ट आप सॉल्व करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2x² minus 2 √6 x plus 3 is equals to 0. इसको सॉल्व करना है हमको बैक फार्मूला में. ओके, 2x² minus 2 √6 x plus 3 is equals to 0. We have to compare with, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ ax² plus bx plus c is equals to 0. इसके साथ कंपेयर करेंगे. So what is the value of a? A is equals to 2. b, coefficient of x as a b, minus 2 √6. Take with sign, sign के साथ लेना है. Constant term as a c, it is 3. Okay. Then what is the value of x? Minus b plus or minus under root d upon 2a. d यानी के b² minus 4ac. पहले उसको फाइंड करेंगे. d का स्क्वायर मतलब किसका? minus 2 √6² minus 4 into a यानी के 2, b यानी c यानी के 3. minus 2 square is 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 are 24, minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0. ओके, लिसन, बहुत इंटरेस्टिंग है. If value of discriminant is 0, the equation has one root only. Real and equal बोलते, it had unique root. Okay, so x, therefore x is equals to minus b का वैल्यू क्या है?
minus 2 root 6 प्लस और माइनस अंडर रूट d का वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 into a is 2, so we get the x is equals to minus into minus plus 2 root 6 upon 4. Therefore what is the value of x? Root 6 upon 2. This is the unique and real root. So write the point. If the value of discriminant is 0, if the value of discriminant is 0, then the quadratic equation has unique root, real and unique root. You can say the real and equal. Alternative word क्या है? Real and equal. तो एक ही रूट रहता है. अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम रहेगा. That is also called the unique root. Okay? Root 6 upon 2. Then we take in the next question. Then take the 10th question. उसके बाद आप खुद सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चंस. Instead of 10 we're taking the 6th question. 6 थोड़ा सा अलग है, so that's why I'm taking. Rest you can enjoy at home. बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं. इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस वैल्यू पुट अप करते रहना है और सॉल्व करते रहना है. So we take the 6th. This is something different, that's why I'm taking 3a square x square. Coefficient of x square नंबर ही नहीं दिया है, that's why I'm taking here. Okay. Plus 8ab x plus 4b square is equals to 0. Okay. इसको हमको सॉल्व. So we're taking the equation. Equation क्या है? 3a square x square plus 8ab x plus 4b square is equals to 0. Okay. We compare with ax square plus bx plus c is equals to 0. इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब क्या है? a. So what is the value of a? A is equals to 3a square. Don't take square and a get cancelled. Okay. So a is equals to 3a square. The value of b is 8ab. Again bb don't do like this. So what is the value of c? C is equals to 4b square. We know our formula is x is equals to minus b plus or minus under root d, that is the b square minus 4ac upon 2a. So first of all we have to find the value of discriminant, that is the b square minus 4ac. What is the value of b? 8ab whole square minus 4 into a का वैल्यू है 3a square into b का वैल्यू है 4b square. और you know 8 square is 64, a square b square minus 4 3s are 12, 12 4s are 48, a square into b square. So 64 minus 48, so you get that it is 16 a square b square, and that is the value of discriminant. So what is our equation? Therefore x is equals to minus b plus or minus under root discriminant upon 2a. Put the value. Therefore x is equals to minus b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या है? 8ab प्लस और माइनस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है 16a square b square. Just we finding 16a square b square upon 2 into a का वैल्यू है 3a square. Okay, so you get that x is equals to minus 8ab plus or minus 16 का रूट है 4, a square b square का रूट है ab upon 6a square. So first time we have to take the positive, second time as a negative. So x is equals to minus 8ab plus 4ab upon 6a square, or
x is equals to minus 8ab minus 4ab अपॉन 6a square. थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, बहुत छोटा है. So we take it, therefore x is equals to minus 8ab plus 4ab is minus 4ab upon 6a square, or x is equals to minus 12ab upon 6a square. Okay, a square a get cancel, x is equals to minus 2b, simplify कर रहे हैं अपन, 2b upon 3a, or x is equals to a square a get cancel, minus 2b upon a. This is the solution of given quadratic equation by formula method. Okay, practice the formula method and do the questions. Okay, we skip the some questions we have to enjoy at home. In next lecture, we'll continue it and taking the third question. Okay, thank you. Have a good day.